Good morning, students. Kushi sir again. Today, I discuss two very interesting dynamics questions that will make you pause and think. But I'm telling you, if you can do them, you should feel happy that yes, you can do many things. Okay, my credentials as before. See the first question. A number of identical rollers, rough rollers, cylindrical rollers are arranged in an inclined manner with an angle of inclination theta. Their radius is smaller, mass is m, identical ones. And a plank, this is the plank. A plank of mass capital N, length L, it slides, moves down the inclination, and on whichever roller it moves, finally it ensures that there is no slipping between them, because the friction between the plank surface and the roller surface is sufficiently high to make the plank, make the rollers also into pure rolling condition. Means there is no slipping between the roller surface and the plank surface. But suppose the plank comes to this roller, initially there will be a sliding, but very quickly that sliding stops to pure rolling of the roll. That's what I mean. Okay, because the friction is sufficiently high to ensure that the plank makes the roller pure rolling in no time. Okay. The non-rotating rollers rotate and attain no slipping condition with the plank as soon as the plank passes over them. But there will be some delta t time during which the friction will act. This sliding friction initially will be there between this roller and this plank. But suddenly this will stop. And my question is, what is this steady state velocity or terminal velocity of the plank? If terminal velocity means it is having no acceleration, it will move with V0. Let V0 be the terminal velocity of the plank. It moves down with a terminal velocity. Why you may say there is mg sin theta acting, but yes, as soon as it enters the new non-moving rollers, the friction force will start acting upward, and this happens continuously. So it can balance the mg sin theta. It balances, and finally, at a particular speed, the friction force between the, while it moves onto the non-rotating cylinders and the mg sin theta, then nullify it. Mg sin theta downward, of course, the friction force will, as it moves on to the non-rotating cylinders, it will upward. Yes or no? On the plank, they can nullify. There is a chance, and they nullify, and he's asking what is that. Once they nullify, the net force will be 0, and that velocity will be terminal velocity. He's asking that. Find the terminal velocity of the plank. Assume no friction at the axle of the, these are the axle, at the axle of the rollers, there is no friction. Friction exists between the roller surface and the plank touching surface. Okay, so now come to this diagram again, same diagram showing. So if it is V0, so number of non-rotating rollers coming in contact with the plank in delta t times how many? If it is moving with a uniform
speed, then how many non-rotating cylinders will come in contact in delta t time? It will travel a distance of V naught delta t, and the gap between successive rollers is small d. So how many rollers will come in contact? V naught delta t is length travel divided by gap between two successive rollers. So this n number of rotating cylinders come in contact with the plank in delta t time. Okay. So let the friction force on each non-rotating rollers after they come under the plank is a finally when the steady state velocity they attain, they become rolling without slipping. There will be no friction because it is why no friction? Because the plank moves with uniform velocity. That's all. Okay. But immediately as it comes onto the non-rotating one, there will be friction. So that friction force, call it F. Initially it is sliding, finally it becomes 0. So friction torque on each roller will be Fr around the axis of the roller or about O, loosely speaking about the axis of the roller, not so loosely, about the axis of the roller, so you can say the torque, friction torque will be a small f into r clockwise. Okay. So gain in angular momentum of each roller when the sliding stops about O. When the sliding stops between the plank and the roller, what is the gain in angular momentum? Angular momentum only about the point. Let's say this is my origin. About this, what is angular momentum? I into omega. I about this axis of rotation into omega, because axis of rotation has no velocity with respect to O for the rollers. Rollers are fixed but rotating. So what is the angular momentum? I of ICZ into omega. Omega is V naught by R because it is rolling without, because there is no slipping between them. Yes or no? When it starts moving and finally come to the no slipping condition, what is the angular momentum it gains? I axis omega, that is half mr square, which is cylindrical. V naught by R, solid cylinder, uniform solid cylinder, that I have not written. That's the assumption. R cancels, half mv naught R is the and gain in angular momentum of each roller when its sliding stops about that axis of the roller, which is same as about the origin OZ. So gain in angular momentum of all the rollers in delta t duration, because delta t duration, this n number of rollers are coming into contact and all of them should gain the angular momentum I omega, I axis omega half mv naught R. So n times half mv naught of R. But mv is n is v naught delta t by d into half mv naught R. Okay. So that is half mv naught square R delta t by d. ये क्या है ये? Gain in angular momentum of all the rollers in delta t duration as the plank slides, as the plank moves. Sliding will initially taking place. Yes, slides like this, and the friction force will start rotating them, and soon they attain the no slipping condition. Okay. So during delta t duration, frictional force on the sliding rollers is how many? F and 1. So n is in delta t duration, n number of rollers, n into f. Okay. This is, so this nf, better I write nf by this nf will be acting like this. Why? Because nf is the delta t duration friction force on the sliding rollers is nf. So reaction of the friction force acts on the plank. If plank exerts a friction force on the rollers, n number of rollers, so n number of rollers exert the same reaction friction force on the plank. So on the plank, what is the reaction friction force? Nf of the incline. But it is moving in uniform velocity, means this must be balancing mg sin theta because no acceleration. So nf is mg sin theta. ये भी आपको रिलेशनशिप मिल गया है ना. तो ये इसमें आओ फ्रिक्शनल द एंगुलर इंपल्स
on the rollers कितना? Frictional torque will be NF into R into del, all these n number of rollers. NF into R into delta T is the angular impulse due to friction. So that is NFR delta T. But F की जगह हम I can write mg sin theta. NF की जगह I can write NFR delta T is frictional angular impulse on the rollers in delta T duration. So this is, so that must be NF is mg sin theta. So mg sin theta R delta T. है ना? Since the angular impulse on the rollers is equal to gain in angular moment of the rollers, so I can, with respect to whom? With respect to that origin which I have given. Okay. So we equate equation 4 and equation 7. Equation 4 में क्या लिखा मैंने? Gain in angular momentum all the rollers in delta T duration is this. That must be equal to angular impulse on the rollers by due to friction force, which is mg sin theta R delta T. Yes or no? मैं equate किया 4 and 7 को. तो V नॉट कितना आया रे बाबू? तो क्या क्या निकाल देंगे? R डेल्टा T निकाल देता हूं. तो 2 mg d sin theta by small m. 2 capital mg d sin theta. Capital means mass of the plant. M is the mass of the roller. D is the roller to roller distance. The distance between successive rollers, and sin theta this is the angle of inclination. So root over of square root of what? 2 capital M G D sin theta divided by small is V. Very simple. This is the terminal velocity of the plant. Roll, see that it does not depend upon the length of the plant, that L. ये लेंथ कितना है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, और रेडियस ऑफ द रोलर स्मॉल आर के ऊपर भी बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा. एंड जो फ्रिक्शन फोर्स है जो इनिशियली स्लाइडिंग है फाइनली बिकमिंग जीरो, सो किस व्हिच मैनर चेंजेस फ्रॉम स्लाइडिंग टू जीरो वो भी कंसिडरेशन में नहीं आ रहा. सो मैनर इन व्हिच फ्रिक्शनल फोर्स चेंजेस फ्रॉम स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू जीरो वैल्यू on the roller, उसके ऊपर भी terminal velocity does not depend. ओके, ये बहुत सही क्वेश्चन है. ये आप एनर्जी से भी कर सकते हो, लेकिन ये इजी, ठीक है ना? हमने इजी मेथड में आपको बताया. समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन 1 मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ने, कोई स्टूडेंट ने मेरे से पूछा व्हाट्सएप में, तो मैंने उसको ऐसा सॉल्व किया. And I think this is the answer, and he has to tell me yet. This must be the answer. There is no other way. Even if you do it by energy method, also get the same answer. Never conserve energy that like this. Whatever is losing potential energy gets converted to kinetic energy of the roller. Never, because some friction loss will take place. They have to be careful. If you consider that, then by energy balance also get the same answer. Okay, you cannot ignore the friction loss here in this case, because even if it is a very high friction, it stops the rollers immediately attend the no rolling, no slipping condition. Even then, during that delta T, finite amount of energy loss will take. Okay, so to avoid just that, I took the angular momentum and angular impulse, angular momentum gain equating to angular impulse. Understood this? I think all of you must have understood this. ये एडवांस बहुत नजदीक है रे, सोच लेना. ये अभी सेकेंड पेज में जाएंगे, जो कि मैं एक क्वेश्चन में बताऊंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ऊपर. सेकेंड पेज में जाके देखेंगे, जिसका कि मैं अगस्त में डिस्कशन किया, लास्ट अगस्त. कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिविजिटेड, माय VDL 6 में जाके देखना. तो उसके ऊपर बेस करके मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो. हम जाएंगे पेज 2 में. ये लो आ गए, फटाफट पेज 2 में आ गए. अभी देखो क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन देखो, ये M1 M2 दो मासेस है. ये इसका मास है M, इसका M2 का मास है 2M. लिखा इधर क्लियरली.
moving along x-axis, one positive x-axis, M2 negative x-axis. Okay, they collide at the origin is O. Then it was observed that they are moving perpendicular direction to the original direction of motion, means they are moving along x. Now after collision, both of them are moving in y in opposite direction, and their respective speeds have halved. It was moving with u1, m1 was moving with u1 before collision, and it is moving now u1 by 2 after collision. Similarly, m2 was moving with u2 before collision and is now moving with u2 by 2 after collision in opposite to in negative y direction. ओके तो पहले उसका ओरिजिनल स्पीड रेशियो क्या था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछा गया, ओरिजिनल स्पीड रेशियो क्या था भाई, एंड कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन कोलिजन प्रोसेस में कितना है, and क्या assumption है, there no horizontal impulse is there, there is no external impulse in xy plane, तभी ना मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंपल्स रहेगा तो कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, आफ्टर कोलिजन द मासेस मूव इन y डायरेक्शन, सो नेट मोमेंटम इन x डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन इज 0, बट सिंस मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड अलोंग x डायरेक्शन, so net momentum in x direction before collision also must be 0. Very simple argument. भाई अगर आफ्टर कॉलिजन x डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नेट नहीं है, तो बिफोर कॉलिजन भी x डायरेक्शन में कोई नेट मोमेंटम था नहीं, बिकॉज ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल इंपल्स. सो बिफोर कॉलिजन net momentum p is momentum, net momentum in x direction is 0. So mu1 I cap plus 2m u2 minus I cap, ये वाला m1 u1 I cap plus m2 u2 minus I cap, m2 is 2m, कोई मैंने लिखा is 0 वेक्टर. सो नाउ मैं I cap निकाल देता हूं. सो mm कैंसिल कर देता हूं, u1 becomes 2u2 in magnitude, so u1 by u2 the speed ratio is 2:1. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें शायद जेई मेन के लिए भी इजी है ये. यस और नो, चलो ठीक है. तो v1 वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इज u1 by 2, हाफ हो गया उसका वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, बट डायरेक्शन इज j क्या. m2 मास का क्या है वेलोसिटी, वो भी y डायरेक्शन, नेगेटिव y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी भी ओरिजिनल स्पीड का हाफ हो गया उसका जो स्पीड है. सो u2 by 2 माइनस j क्या. चलो ठीक है. अभी हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है. मैंने ये डिस्कशन किया कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन इन जनरलाइज्ड मैनर इन द वीडियो लेक्चर VDL 6. That name is coefficient of restitution revisited, uploaded कब किया मैं 4 अगस्त 2025 को किया है. 2025 को मैं 2026 लिख दिया, इसमें 2025 को मैंने अपलोड किया. ठीक है, जाके देख लो आप मैं क्या डिराइव किया था. v2 minus v1 relative velocity after collision, it is not a one dimensional collision, two dimensional collision. So component of relative velocity after collision along impulse direction, ये impulse is change in momentum. So m2 का change in momentum is ये, m2 इधर था मैं कैंसिल कर दिया. So if I multiply m2, that gives you change in momentum of m2 or j impulse on m2. So relative velocity after collision dot impulse is equal to -1 into e into relative velocity, same relative u2 minus u1 dot same impulse. ये जनरल रिलेशनशिप है. ठीक है, तो v2 minus v1 कितना है, v2 is u2 by 2 minus j क्या, माइनस v1 कितना है u1 by 2 j कैप. ये अपवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है. ठीक है, उसका टोटल हो गया u1 plus u2 by 2
माइनस जे क्या, ये वाला टर्म v2 माइनस u2 कितना, v2 इज अगेन u2 बाई 2 माइनस जे क्या, बट u2 इज u2 माइनस आई कैप, सब्ट्रैक्ट करने से प्लस आई कैप हो जाएगा, सो u2 कॉमन आई कैप माइनस हाफ जे कैप, ये आ गया। u2 माइनस u1 कितना, u2 is u2 minus I cap and u1 is u1 I cap। एक बार देख लो ये डायग्राम, u1 I cap, u2 minus I cap, ओके, that u2 minus u1, तो कितना हो गया, u1 प्लस u2 माइनस I cap बाहर को ले गया, तो ये तीनों का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, ये तो दोनों सेम ही है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे u1 प्लस u2 बाई 2 माइनस जे क्या डॉट u2 इंटू आई कैप माइनस हाफ जे कैप इज इक्वल टू -1 is minus e into u2 minus u1, that is u1 plus u2 minus I cap dot same v2 by minus u2 a1 dot u2 into I cap minus j cap by 2। अभी उसको डॉट प्रोडक्ट लो, u1 प्लस u2 बाई 2, ये j कैप, ये j कैप के साथ रहेगा, सो इंटू u1 बाई u2 प्लस 2 इट माइनस j 1, सो u2 बाई 2 रहेगा, ये राइट साइड में आओ, माइनस ही u1 प्लस आई कैप को सिर्फ देखेंगे, तो आई कैप माइनस आई हो -1 हो जाएगा, एंड u1 प्लस u2 ये आई डॉट j तो 0, इसमें भी j डॉट आई 0, 0 ही होगा ना, तो -1 माइनस ई मतलब ई पॉजिटिव हो गया, तो u1 प्लस u2 इंटू u2 बाई 4 इज इक्वल टू ई इंटू u1 प्लस u2 इंटू u2, मैं ये दोनों निकाल देता हूं दोनों साइड से, सो ई बिकम्स 1/4, ठीक है, बहुत इजी हो गया ना, ये जो ये इक्वेशन थोड़ा देख लो जाके, VDL 6 में मैंने अच्छे से डिराइव किया उसको, ये आपको किताब में नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा, एंड 2 डायमेंशनल कोलिजन के लिए यही एप्लीकेबल है। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी रेशियो ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, व्हिच विल बी डाउन राइट रॉन्ग, अंडरस्टूड दिस, सो यू विल बी 1/4। अगर 1/3 वेलोसिटी हो जाता तो यू बिकम v1 will be u1 by 3 and v2 becomes u2 by 3, then ये 1/9 हो जाता, लाइक दिस। सो ध्यान में रखो, आपको जो भी पॉसिबिलिटी है मैं समझा रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, ये एडवांस में आ सकता है, ये बहुत ज्यादा इजी ऐसा नहीं है, बहुत डिफिकल्ट तो है नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा आसान भी नहीं, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन अगर आप VDL 6 रेफर कर दिए होंगे तो आपके लिए तो कोई बच्चों का खेल ही हो, समझ में आ रही है ये। चलो मैं 2 इंपॉर्टेंट डायनामिक्स क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन किए, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया था, किसने मेरे से पूछा था, तो मैंने ये बोला यार ये तो मैं VDL 6 में डिस्कशन किया हुआ, और वो तो कुछ भी नहीं था, वो फर्स्ट वाला जो ठीक है, फर्स्ट वाला मेरे को अच्छा लगा, नो डाउट इन दिस, वो चिंता छोड़ो है, मैं तो घर बैठ के करो, आप एग्जाम हॉल में करेंगे, एग्जाम हॉल में करने से मैं भी बहुत सारे मिस्टेक करूंगा, आप देख सकते, चिंता छोड़ दो, कॉन्फिडेंट रहो, आराम से सब कुछ कर सकते, ठीक है ना। चलो मैं आपके साथ फिर बहुत रेगुलरली में आ रहा हूँ, तो फिर कुछ क्वेश्चन सही से लाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट मेरे लिए, जो इम्पोर्टेंट होगा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट हो, तो आप उसको देख लो, ठीक है। क्या है, कोई डिफिकल्टी है अभी, है ना, या और एक बार again you can just see my discussion, come to if read through it again, don't worry, am I clear, read through it again, you will understand it fully, okay, this is a good question, but I have solved it a very easy manner from angular momentum and angular impulse concepts, ठीक है।
चलो एनर्जी बैलेंस भी आप कर सकते हो, अगर करो, अगर नहीं हुआ तो मेरे से फिर मैसेज भेजो, मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, विल meet very soon, have a good day, thank you all.